Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, how are you all? So, today I'm here with one more video where I'm going to discuss the most important LAQs of physics exam, which is going to be held on 2nd of April. Okay, so total we have 12 chapters in physics. So from every chapter, the most important LAQs I'm discussing with you, please note it down so that you can write your LAQs very well in physics. Okay. तो फर्स्ट चैप्टर में से द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सर्फेसेस, इस चैप्टर में हमको फोकस करना है कम्प्लीटली रे डायग्राम्स पर. ओके, रे डायग्राम्स फॉर द कॉन्केव मिरर. इसके ऊपर एक लैब एक्टिविटी भी है. ओके, सो वी हैव टू फोकस ऑन द रे डायग्राम्स. देयर 5 केसेस वी हैव टू डिस्कस. केस नंबर 1, where we are placing the object beyond C and image is forming between F and C. Case number 2, where we are placing the object between F and C and image is forming beyond C. Case number 3, where we are placing the object on C and we are getting the image on C. Case number 4, where we are placing the object between P and F, which is also known as one close to mirror. In this case, we are getting the image behind the mirror, which is a virtual image. And the last case is, okay, where we are placing the object at focus and where we cannot see exactly the image where the image is forming. तो ये 5 रे डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट है. इसका डायरेक्टली हमको मूव करना है चैप्टर नंबर 3, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे, जहां से ओके 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज लैब एक्टिविटी. देयर इज ओनली वन लैब एक्टिविटी हियर. ओके, द लैब एक्टिविटी इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल व्हिच लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस. काफी इंपॉर्टेंट लैब एक्टिविटी है. सो मूविंग ऑन, फोर्थ एक्टिविटी दी गई है इसमें, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद metals carbonates and metal hydrogen carbonates, where okay carbon dioxide gas will release. And 7th activity is also given here, where we have to check that whether all hydrogen compounds are acids or no. Okay, इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 जो है ना हाइड्रोजन कंपाउंड्स लेंगे, अल्कोहल, ग्लूकोज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. Okay, so the result is all hydrogen compounds are not acid, only those compounds okay releasing H plus ions are known as what acids. Other compounds are not known as acids here. So 4th chapter में अगर हम जाएंगे तो काफी important activity है. Okay, like okay, find the focal length of a convex lens experimentally, or else does focal length of a lens will change when it is completely immersed in water? Yes, focal length of a lens will completely change when it is immersed in water, because lenses are completely depend on refraction. Okay, refraction. What is the meaning of refraction? Okay, bending of light whenever the light is traveling from one medium to another medium. काफी important lab activity है, काफी repeated activity है. अगर हम 5th chapter में जाएंगे, human eye in the colorful world, यहाँ से आपको पढ़ना है okay formation of rainbow. Okay, just one question is enough, formation of rainbow. Then okay, structure of an atom. इसमें से हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको 10th हो या इंटरमीडिएट हो, दोनों भी यानी क्लासेस में आपको काफी इंपॉर्टेंट है. इसके बाद क्वांटम नंबर्स पढ़ना है आपको. ओके, एलएक्यूज के लिए क्वांटम नंबर्स, ये 2 टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एलएक्यूज हियर. एंड 7th चैप्टर में से ओके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियोडिक टेबल. मैं एक ही टॉपिक बताऊंगा. ओके, इसको अच्छे से पढ़ना है. व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? ओके, एंड राइट द फैक्टर्स ऑन विच ionization energies depend on. Okay, काफी important activity है ये. Okay, then moving to chapter number 8, chemical bonding. और LQs के लिए जो most important topics है वो है formation of end-to-end O2 molecule, okay, with valence bond theory, or we can say hybridization theory. काफी important topic है. Then formation of okay BeCl2 and BF3 molecule. Okay, and NH3 also. LQs के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये. एंड अगर चैप्टर नंबर 9 में जाएंगे हम, ओके, इलेक्ट्रिक करंट. इसमें 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं ओके जिसको स्टडी करने के बाद उसमें से एक क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. पहला है ओम्स लॉ. ओके, व्हाट इज ओम्स लॉ? V by I is always constant, वोल्टेज बाय करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये एक एक्टिविटी है, इसको स्टडी करना है. इसके साथ साथ ओके 3 और एक जो क्वेश्चंस है वो हैं ओके सी resistance of a material depend on 4 factors. पहला है टेम्परेचर, दूसरा है नेचर ऑफ ए मटेरियल, तीसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चौथा है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर.
इसमें से हम क्या पढ़ेंगे? रेसिस्टेंस एंड नेचर ऑफ मटेरियल. If nature of material changes, the resistance will also changes. Okay. If length of a conductor changes, उसके बाद जो next question है, if the length of a conductor changes, resistance changes. And resistance is directly depend on these two factors: length of a conductor, nature of a material. But resistance is inversely proportional to area of a cross section of a conductor. ये तीन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं along with ओम्स लॉ. ये चार पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा. अगर आप इसके बाद 10th चैप्टर में जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई वांट यू ऑल टू फोकस ऑन ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट. ओके, सो ऑस्टेड वाज द फर्स्ट वन who told the world that electricity and magnetism are interconnected phenomena. These two are not different sciences, but this is just one science or interconnected with each other. तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से. उसके बाद अपन और आगे जाएंगे हम. देन वी हैव टू स्टडी प्रिंसिपल्स ऑफ मेट्रोलॉजी. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मेट्रोलॉजी में ना स्पेशली फॉर LAQs हम पढ़ेंगे. ओके, कोरोजन का एक्टिविटी दी गई है, ठीक है ना. ओके, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन अंडर विच मटेरियल विल गेट corroded. So material will get corroded whenever the material are coming in contact or reacting with air and water. ये काफी important activity है. Along with this activity, okay, some important processes used in metallurgy like smelting, roasting, calcination, flux. ये काफी important topics हैं. Okay, for LAQs. Then moving to the last chapter here, carbon and its compound. इसमें अगर LAQs पढ़ना है तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे LAQs में allotropes of carbon, very important topic. इसमें SAQ भी cover हो सकता है. Then hydrocarbons, the compounds containing hydrogen and carbon are known as what? Hydrocarbons. तो hydrocarbons ही काफी important topic है. Then chemical reactions in chemical reactions यानी there are few chemical reactions given in terms of carbon and its compound like combustion reaction, oxidation, reduction, substitution reaction, addition reaction. These are really very important for the LAQs. इसके साथ हम पढ़ेंगे cleansing action of soap. So these are the very important questions that we have to study for LAQs. So tomorrow I will make one more video where we will discuss the most important SAQs and the VSAQs of physics here. Okay, challengingly I'm telling you that if you study these questions, definitely you're going to study or you're going to get full marks in physics exam. Okay, we have a good time with us, so we can wisely use this time and make ourselves very perfect for the forthcoming examination. Okay, so stay tuned. Okay, and follow my channel, which is on Instagram, and just do like it, subscribe to my YouTube channel here, and comment. Okay, whichever the topic you are not able to get it, if you comment, definitely I will reply and I will make a detailed video on that particular topic. Okay, so children, do not forget to subscribe my channel. If you subscribe me, okay, you will get more notification, you will get more and more informative videos based on maths, physics and chemistry of class 10 and intermediate 2. So thank you everyone, take care, bye.